नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षा भाटी from Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Students, today we discuss about equipments and tools for food processing from the subject Food Processing and Safety Standards of Program BSc Agriculture Semester 8th semester. Okay, today there are some tools and equipments which are used for food processing industries, from which today we discuss some and some later on other day. First is air lockers. Air lockers can be imported or made locally from glass tube. They are filled with sodium metabisulfite solution and prevent air from entering the fermentation tank and spoiling the wine fermentation. Basically क्या है, एयर लॉकर्स जो ग्लास ट्यूब के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और उनको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सॉल्यूशन से भर दिया जाता है ताकि उसको फर्मेंटेशन टैंक के अंदर एयर पास ना हो और वाइन का फर्मेंटेशन होता रहे. सेकंड इज ब्लांचर्स. हॉट वाटर ब्लांचर्स, इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक हॉट वाटर ब्लांचर और एक कोल्ड स्टीम ब्लांचर्स. Hot water blanchers are boiling pans that are used mainly for vegetable. These are less acidic than fruits, therefore they can be made from aluminium. A mesh soup is used to remove the hot vegetables. Steam blanchers use the same pans and have a removable mesh base to hold the vegetables boil the boiling water. Then third is boiling pans and pasteurizers. There are two types of boiling pans. Smaller scales of operation are simple stainless steel or aluminum, but aluminum is not preferred. Pan can be placed directly over the heat source. However, viscous products such as sauce, syrups, jams, and chutneys are likely to burn onto this type of pan unless great care is taken to control the heat and thoroughly stir the mixture as is it being heated. Mainly जो अपने प्रोडक्ट्स बनते हैं फूड प्रोसेसिंग के, उसके पास्चराइजेशन के लिए या उनको बॉइलिंग के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसको बॉइलिंग पैन्स कहते हैं. देन बॉयल कूलर्स, बॉटल कूलर्स. एज नाम से ही पता चल रहा है, जो बॉटल्स है उनको कूलिंग करने के लिए. These are used to increase the rate of which glass containers cool by allowing the containers to pass through an inclined water bath. There is a flow of cooling water in the opposite direction to the containers. Next is bottle washers. The time consuming part of bottle washing is rinsing out the detergent, and bottle washers are used to reduce this time. They are made by vertical pipes onto a larger base pipe and connecting the base pipes to a water supply. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पाइपलाइन होती है जिसके ऊपर रॉड्स लगी रहती हैं, उस पे हम बॉटल्स को रख देते हैं और वाटर सप्लाई होती है, वो पूरी बॉटल्स को थॉरोली क्लीन करती जाती है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता. देन कैप्सूल सीलर. द मशीन हीट्स प्लास्टिक कैप्सूल्स that are used as a tamper evident seal on bottles. In operation, the thermostatically controlled machine is switched on and allowed to heat. Then कोरर्स. कोरर्स आपको पता है, जो पाइनएप्पल वगैरह होते हैं, एप्पल होते हैं, उसमें कोर्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये बनाया जाता है. द कोर ऑफ पाइनएप्पल इज रिमूव्ड बिफोर द फ्रूट इज बॉटल्ड और ड्राइड. मैनुअल कोरर्स आर अवेलेबल फ्रॉम केनिया एंड मोटराइज्ड वर्जन्स आर आल्सो अवेलेबल. Courers are not required when pineapples are processed for fruit juice or pulp, but the whole fruit is pulped. Crockers machine compress the cork and insert it into the bottle. Basically आपने देखा होगा bottles के ऊपर एक wooden type का cork लगा रहता है, तो उसकी जो मशीन की तरह बॉटल्स के ऊपर उसको एयर टाइट करके उसको बंद करना क्रॉकर्स कहलाते हैं. These machines are imported from Europe or South Africa. In operation, a cork is inserted into hole in the top of the machine and a bottle is held in place by the sprung stand.
Next is crown cappers. Crown cappers, a hand operated crown capper is a simple die that is placed over the cap on a bottle and is then struck with a hammer to seal it. Then deep fat fryer. The simplest fryer is a pan of oil over a fire, but the little temperature control and a risk of burning both the oil and the product. This equipment is a more sophisticated version of this for use in rural areas. Then dicers. Manual dicing machines first cut the material into strips and then these are cut into cubes. आपने देखा होगा फर्स्ट जो डायसर्स होते हैं, कटिंग मशीन्स जिसे हम कहते हैं, पहले वो उसको लॉन्गिट्यूडली लंबी स्लाइसेस में काटता है, देन उसको क्यूब्स में काटता है ताकि वो यूनिफॉर्म साइज में आपको मिले, तो वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है. वेयर एज अगर हम हाथ से मैनुअली काटेंगे तो क्या होगा, अनइक्वल साइज होगा, वो दिखने में इतना एप्लीकेबल नहीं रहेगा. They should be washed with detergent after use and rinsed with clean water. The blade should be sharpened as needed. Then dryers. ड्रायर्स जो भी हम वैसे बेसिकली जो ड्राइंग करते हैं वो सन ड्रायर होता है, बट इससे लो कैपिटल भी होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है. बट अगर हम सोलर ड्राइंग करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डस्ट आ सकता है, बर्ड आ सकता है, रेड्स इंसेक्ट्स उसको प्रोटेक्ट कर प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं, या कभी बारिश हो गई या कुछ ऐसी कोई भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, उसमें माउल्ड आ जाएंगे और ड्राइंग हम नहीं कर सकेंगे. इसके कारण हम लोग आजकल कन्वेंशनल ड्राइंग, सोलर ड्राइंग को छोड़ के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फॉर ड्राइंग के लिए. देन fermentation tanks and food grade drums. Fermentation tanks should be made for food grade plastic or stainless steel and are not black or yellow plastic water containers. They have pigment and plasticides that could contaminate the wine. Then next is fillers या insulated filling tanks. At a small scale, solid and viscous products such as pickles, jams or chutneys are filled by hand using jugs, funnels, scoops or ladles. Liquid products can be filled using by gravity fillers made by fitting a tap to a stainless steel and food grade plastics. Next is filters. Filters for juices, wines, etc. are bags made from muslin or fine cotton cloth. They should be sterilized each day by boiling to 10 to 15 minutes and fully dried by hanging in sunlight. Specialist wine filters that use a filter agent such as bentonite, perlite or isinglass glass as an important for imported the products. Then fruit crushers. Powered machines that are used to crush pineapples or other hard fruits consist of a rotating screw inside a casing. The casing has a screen in the base. Juice pulp drains from the outlet in the base of the casing and skin is ejected from the end of the casing. Down a chute, the casing should be fitted with wing nuts to remove it easily. Students, that is all some equipments and tools used in processing industry which we are discussed. Now, thank you for the watching. This video is from powered session of Digital 2.0 from Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, please on the class comment in the inbox. Till we